Let's move on to our next question, which is question number 41 of 2 marks. Also quite tricky question, I would say. So let's also mark this with red. 41, question number 41, MCQ of 2 marks. 41 in master question paper. Question contains the single line diagram of power system, something like this. 3-bus power system. Bus 3, bus 2, bus 1. P1 is fed to bus 1 and P2 is fed to bus 2. Okay. The reactants are given as J alpha x, J beta x and J gamma x in ohms. Basically, it is given, it is a lossless power network. Question states this, mind it, such that voltage magnitudes as all of us are given as 1 per unit. That is V mod V1 equal to mod V2, mod V3 equal to 1 per unit. Okay. And difference is phase angle is very small. Delta nearly equal to 0. And line reactances are marked as alpha, beta. Line reactances are marked, already marked in the figure, and it's given that alpha, beta, and x are strictly positive, everything 0. And P1, P2 are power injections at buses 1 and 2 respectively in per unit. Such that relation is given P1 equal to MP2. Also it is given that no DL power flows from bus 1 to bus 2. That is DL power from bus 1 to bus 2, P1 2, P2 1 equal to 0. So 4 statements, 4 equations are given, 4 relations are given between alpha, beta and gamma as follows. A is gamma equal to m beta, B is beta equal to m gamma, C is alpha equal to m gamma, और डी है अल्फा इक्वल टू एम बीटा. ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इसका ये ऐसा रहेगा. इट इज ऑलरेडी गिवन दैट P12 इक्वल टू P21 इक्वल टू 0. व्हाट इज द फॉर्मूला P12? वोल्टेज मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेते हैं और फेज एंगल का डिफरेंस लेते हैं, है ना, और रिएक्टेंस से डिवाइड करते हैं. रिएक्टेंस बिटवीन बस 1 एंड बस 2 इज अल्फा एक्स एंड फेज एंगल इज हाउ मच, साइन ऑफ द फेज एंगल. For small phase angle, what we can write? Sin delta, nearly equal to delta. Delta, as it is given, the delta is equal to nearly tends to 0. Nearly equal to 0 tends to 0. You can write this. ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1, V2, delta 1 minus delta 2 by alpha x equal to 0. और
delta 1 equal to delta 2. Simple. You write this. So the phase angles of bus 1 and 2 are equal. Now, as no real power flows between bus 1 to from bus 1 to bus 2 और vice versa, क्योंकि कोई रियल पावर फ्लो नहीं कर रहा और ये नेटवर्क पूरा लॉसलेस है, तो जो पावर बस 1 को फिट किया है P1 will flow through this reactance to bus 3. Simply write this. And the power fed to bus 2 P2 will be also flowing through this reactance to bus 3. तो पूरा रियल पावर उधर ही फ्लो कर जाएगा, कोई लॉस तो है नहीं नेटवर्क में. तो जो P1 जो बस 1 से में इंजेक्ट किया जाएगा वो बस 3 में जाएगा और P2 जो बस 2 में इंजेक्ट किया वही बस 3 में जाएगा. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर फ्लो इक्वेशन लिख सकते हैं, बस 1 3 एंड 2 3 समथिंग एज P13 will be mod V1 mod V2 mod V3 by what is the reactance beta x into sine of delta 1 minus delta 3 equal to P1. As there is no real power loss it is given, and as no power flow is flowing from bus 1 to bus 2, so all the power flows through this reactance to bus 3. ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. और दूसरे क्वेश्चन हम ये भी लिख सकते हैं कि P23 इक्वल टू, ओके, तो इसको और सिमिलर भी कर सकते हैं. V1 P2 1 दिया हुआ है, 1 1 all are 1. So this and for small delta difference in phase angle you can write sin delta minus 1 delta minus delta 3 is nearly equal to delta 1 minus delta 3. इसको nearly equal to delta 1 minus delta 3 by beta x लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं. Similarly इसको लिख सकते हैं mod V2 mod V3 by gamma x is the reactance between bus 2 and bus 3 sin delta 2 minus delta 3. ये दोनों 1 है, these are both 1. sin delta 2 minus delta 3 is nearly equal to delta 2 minus delta 3, and this is also equal to P2. So P2 equal to delta 2 minus delta 3 by gamma x. Now from this relation we have delta 1 equal to delta 2, so we can write this delta 1 minus delta 3 by gamma x. Okay. Now it is given that in the question that P1 equal to MP2. Okay, so P1 equal to MP2 मतलब क्या हो गया, यहाँ से P1 का एक्सप्रेशन पुट करते हैं, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3 बाई बीटा एक्स इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3 यहाँ से बाई गामा एक्स. डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3 कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, क्या बचा, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं, हम लोग मिल जाएगा, विल गेट गामा इक्वल टू m टाइम्स बीटा. Pretty simple. So this is the required answer and this is the required expression that the question is looking for. तो इसका आंसर कुछ बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं, मार्क A. So this is an MC question of 2 marks and the solution has been described in good detail. You can refer to it. तो इस प्रकार था solution. आशा करता हूँ समझ गए होंगे. I hope you have understood it. If you have any comments, you can write, any query or doubt, you can ask in comments.